Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. So today we will continue our discussion on hidden Markov models. And if you remember in the last class, we have already covered the basic idea of hidden Markov models, and we have already seen how to compute the likelihood, the forward probability of a particular sequence given a hidden Markov model. We've also seen how to calculate the backward probability. So both of these things, by the way, are important because today in our lecture we'll be using both the forward probability and the backward probability in order to create a mechanism for training a hidden Markov model given just a sequence of observations. पिछली क्लास के अंदर जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में टच नहीं कर सके थे, I realized afterwards that we never discussed in detail why we call this new type of Markov model a hidden Markov model. So what's hidden about it? And that's an important question. So if you remember, when we moved from a simple Markov chain to the hidden Markov models, the change that we made was that in a Markov chain, we were just getting the probabilities of the state transitions. So the probability of transitioning from one state to the next. And if you remember, we just simply used the bigram probabilities to create the first order Markov chain. The thing that was missing there was that we could use a Markov chain to find out the total probability or the total likelihood of a particular sequence. However, we could not use it to directly compare across two sequences, or given a sequence, we could not find out the probability of a second sequence. And that is what was required for our problem. So if you remember, in speech recognition, we are given a sequence of observations, and in our case, the sequence of observations could be a sequence of frames, and each frame being a small window into the actual audio file. So अपनी audio file को छोटे-छोटे chunks में आपने divide कर दिया और sequence of frames आ गया. ये वो चीज़ें जो हम observe कर रहे हैं, ये वो spectrograms हैं या MFCCs हैं. So ये एक sequence of vectors हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं जिसे हम देख रहे हैं. So this is what is known as the observed sequence, जो हमें नजर आ रहा है. Now there is a hidden sequence in which we are interested, and that hidden sequence is, let's say, the sequence of phonemes जिसके ऊपर ये frames map होंगे. So given an apparent sequence, we are interested in finding out another sequence which is a hidden sequence, and we want to find out the highest probability hidden sequence. ठीक है. तो अभी तक जो हम लाइक्लीहुड प्रॉब्लम देख कर आए हैं उसमें हम सिर्फ इतनी चीज देख कर आए हैं कि एक ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस की, एक अपेरेंट सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे गिवन अ हिडन मार्कov मॉडल. अभी तक हमने ये चीज देखी. अभी तक हमने ये नहीं देखा हाउ डू यू फाइंड अ हिडन सीक्वेंस, हाउ डू यू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ फोनीम्स गिवन अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेट्स से फ्रेम्स. तो ये वो प्रॉब्लम है जिससे आज हम शुरू करेंगे. विल बी स्टार्टिंग विद दैट, एंड दैट्स द डिकोडिंग प्रॉब्लम. हाउ डू यू find out the maximum probability hidden state sequence given an apparent sequence or given an observed sequence of inputs, let's say of frames. ठीक है. तो I hope this is becoming clearer as we are proceeding along this discussion. आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम hidden Markov models की जो basic discussion है वो conclude कर लेंगे. And in the last two lectures we'll be talking exclusively about speech recognition and then fitting whatever we have learned here onto the speech recognition architecture. We have already studied in parts, we have studied I think almost like 70% of the speech recognition architecture already. The rest of the 30%, I think around 10 to 15 will be covered today, and in the next two lectures we'll be covering the rest of it to complete our understanding of one way of implementing a speech recognition system, or an automatic speech recognition system as it's called in the domain. It's called an ASR, an automatic speech recognition system. All right. So again, these are the main sources जहाँ से ये slides बनी हैं. जैसा कि मैंने पहले भी explain किया था that the actual examples in these slides were just constructed by myself, और उसके ऊपर जो slides का पूरा बनना है और जितना कुछ भी वो animation आपको नज़र आती है वो सारा कुछ मैंने खुद बनाया है. बाकी जो उसका basic idea है और जो उसका background है वो आपका mainly आ रहा है speech and language processing की book से, जुराफ्स्की एंड मार्टिन की. All right, Ji. So this is the second one in the series of three questions that we looked at when we were discussing hidden Markov models. The three types of questions that you can ask about or with the help of a hidden Markov model. So this is the decoding question, and the question is to find the most probable state sequence given an observation sequence. So you're given an observation sequence. आपको, if you remember, the example that we constructed was that we can buy one of three types of things. We can buy food or pets or electronics, and we have three types of markets: food market, electronics market, and pet market. And we also saw that each of those markets have some shops
which belong to the other two categories. And we looked at exact numbers of those to construct a very precise example so that we can use it throughout the hidden Markov models. We will be using that again today. So the question today is कि आपके सामने मैं let's say एक sequence of purchases करके आया हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये पहले पेट खरीदा, फूड खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, फूड खरीदा, पेट खरीदा, ये इस तरतीब में मेरे पास एक सीक्वेंस है. And now your task is to find out the most probable sequence of markets that I visited. और इसमें जाहिर है बहुत से फैक्टर्स हैं. हो सकता है कि मैंने फूड जो है वो पेट मार्केट से ख़रीद के खा लिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ही शॉपिंग करते हुए मैंने खाना खा लिया हो, इसी तरह से जो है वो पेट लेते हुए वहीं से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ खरीद ली हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो डिस्टेंसेस भी इसमें मैटर करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ शॉप्स भी मैटर करेंगी, टाइम ऑफ डे हो सकता है मैटर करे, जो कि हमने नहीं इस वक्त फैक्टर इन किया हुआ अपनी इस प्रॉब्लम के अंदर. बट देयर कुड बी सेवरल extrinsic factors which may impact a particular person's decision to buy something from a particular market. ठीक है ना? So now this problem that we are discussing now is the one which is the most closely related to our speech recognition architecture. यहाँ पर हमारी एग्जांपल के अंदर तो हमने वो मार्केट्स और चीज़ें खरीदने की बात की हुई है. For the speech recognition problem, these cues would be your phonemes. So these are your set of, let's say, 65 phonemes of Urdu. So the cues are the phonemes, and the O's, the observations, are the frames. The observations are the frames from our audio file. So given these observations, given this sequence of frames, we are interested in finding out the particular sequence of phonemes that maximizes this overall probability. So we want to find out the maximum probability hidden state sequence, meaning the maximum probability phoneme sequence given a sequence of frames. ठीक है. So ये अब हमारा टास्क है. Let's concretely do this. So let's assume ये हमारे पास एक observation sequence है, pet, food, and we want to find out the maximum probability sequence of markets जिससे ये चीज़ें खरीदी गई हैं. So the state sequence Q with the maximum likelihood over all possible state sequences is chosen. So probability of Q given PFF. अगेन यहाँ से अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, और आपको याद होगा हमने यही बिल्कुल सेम डायग्राम देखी थी जब हम फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, जहाँ पर हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे सीक्वेंस की. अब टोटल नहीं फाइंड करनी, अब हम इंटरेस्टेड हैं दी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस. तो पहले इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है और वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किन स्टेट से बनती है. सो दो सवाल हैं अभी, एक सवाल नहीं है. लाइक्लीहुड क्वेश्चन में क्वेश्चन ये था कि आपने टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी थी, किसी भी पाथ से आप आ रहे हैं. अब आप ये कह रहे हैं नहीं, मुझे बेस्ट पॉसिबल पाथ बताओ ऑफ द मार्केट्स जिससे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी मेरे पास निकल रही हो. सो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द बेस्ट path, and then once I find the total probability, not the total probability, the probability of that best path, then I will trace back to find exactly उस path के अंदर जो है वो कौन कौन सी markets आई हैं. Let's do this and it will become clearer as we go along. All right. सो फॉर एग्जाम्पल आपने पेट खरीदा पेट मार्केट से, फूड खरीदा पेट मार्केट से, एंड देन आपने पेट खरीदा फूड मार्केट से. इसकी कोई एक प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये हम अपने पास लिख लेंगे. इसी तरह से इस सीक्वेंस की कोई एक प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी इस सीक्वेंस की होगी. सो वंस वी फाइंड ऑल ऑफ दीज सीक्वेंसेस, इसमें से हर एक सीक्वेंस की कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी होगी. And we are just interested in what? The maximum probability. Out of all of these paths, out of all of these n raised to the power t paths, we are interested in the one path which has the maximum probability. और उस path को हम मार्क करना चाहेंगे कि अच्छा फॉर एग्जांपल वो ये path है कि जी आपने पेट खरीदा पेट मार्केट से, फूड खरीदा फूड मार्केट से, और उसके बाद लेट से आपने फूड खरीदा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से. आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप. सो अल्टीमेटली हमारा इंटरेस्ट होगा कि आप ये वाला पाथ फाइंड कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें जो कि बाकी सारे पाथ से ज़्यादा होगी, और फिर इसके जो मेंबर्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वो आप आउटपुट कर दें. So concretely speaking, it is basically a max over all of these. अगर आपको याद हो likelihood problem के अंदर यहाँ पर sum था, it was a sum of all of these probabilities. हम total probability ढूंढना चाहते थे किसी एक sequence की. अब हम maximum probability of hidden states ढूंढना चाहते हैं given this sequence. So we are looking maximizing over, let's say, PPP, PPE, PPF, PEP, PEE, PEF, and so on and so forth. All of the paths. So you can clearly see that these are n raised to power t paths. So the cost of this overall formulation is n raised to the power t. We've already been through this, so now you know what's coming your way. How would we reduce this cost, and how would we do it more in a more efficient manner? Of course, we'll be using dynamic programming. So once we use dynamic programming with this, we maximize
the local paths, the paths locally, and then we form an overall path using these maximum paths which were found at each stage of the computation. So let's see how it's done. It's very similar in its computation. It's very similar to the likelihood problem, the forward probability. The only difference is that instead of a sum, we're just doing a max. All right. So we find out of these three paths that we can use to reach this state, we find the max. So let's assume कोई इन तीनों में से एक max होगा. Similarly, यहाँ तक आने का कोई एक max होगा जो इन तीनों में से होगा. So we'll just mark the one which is max. और हम ये back pointer भी रख रहे होंगे इसे mark करने के लिए. So you keep doing this until you find a max for all. So for example, there will be a max here. So अब इस stage तक के हमने ये सारे max निकाल लिए. हमें पता है कि इस stage तक पहुंचने का सबसे best path कौन सा है. So इस column तक के हम जो है वो मैक्स जितने भी हैं वो निकाल चुके हैं. नाउ यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर इससे पीछे देखने की जरूरत नहीं है. अब हम बस इसी स्टेज से इन्हीं मैक्स को आगे बढ़ा देंगे. So we will find for these three paths that can lead to this state, we'll just find the maximum. और जाहिर है पिछला max अब इसके अंदर incorporate हो चुका है. So using the previous max, we construct a new max, and again we do the same here. We do the same here, and then finally to reach the final state, एक max वहाँ पे आ जाएगा. और अब यहाँ से क्योंकि हमने अपने पास याद रखा हुआ होगा, बैक पॉइंटर्स रखे होंगे max के, तो लिहाजा we can basically so assume करें कि इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट आपके पास आया है वो ये वाला आया है. तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से जो भी मैक्स आया होगा हम वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से पीछे जाएंगे and so on and so forth, right? So this is how and this is the final max. So this is how you run the Viterbi algorithm. So this is the algorithm for finding the best hidden state sequence given an observed sequence. ठीक है. एंड एज यू हैव सीन, इसके अंदर जो हमारी कंप्यूटेशंस हैं वो अब कम होकर स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सीक्वेंस हो गई हैं. सो इंस्टेड ऑफ n रेज़ टू द पावर t, दिस इज नाउ n मल्टीप्लाइड बाय t. सो हमारी रीजनिंग बिल्कुल सिमिलर चल रही है पिछले उससे. इनफैक्ट अब मैं आपको ये एल्गोरिदम भी एज सच अलग से जनरल फॉर्म में नहीं दिखाऊंगा. आई विल जस्ट रन द एल्गोरिदम फॉर यू सो दैट यू कैन सी इट इन एक्शन एंड यू कैन क्लियरली सी कि इसके अंदर क्या हो रहा है. दिस इज बाय द वे अ really powerful and a useful algorithm which is used in many parts for solving many problems in machine learning. ये आपको बहुत जगहों पर मिलेगा और मुख्तलिफ नामों से मिलेगा. कभी यही एल्गोरिदम आपको, और मैं थोड़ी सी इसकी आगे बात करूंगा, बीम सर्च के नाम से मिलेगा. कभी इससे बहुत सिमिलर एक एल्गोरिदम आपको ए स्टार सर्च के नाम से मिलेगा. सो इसको सर्च एल्गोरिदम भी कहते हैं, इसको डिकोडिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं, इसको इसके नाम विटरबी से भी बुलाया जाता है. इसको बहुत से डिफरेंट नामों से इस एल्गोरिदम को याद किया जाता है. सो जस्ट मेक श्योर दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस एल्गोरिदम इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यू आर एबल टू मैप बैक एंड सी, oh okay, so this is the Viterbi algorithm which we are using here. All right. So this is known as the Viterbi algorithm, as we have already discussed. Let's move on and let's run this algorithm concretely for this same sequence of observed states PFF, and given this hidden Markov model with the A and B matrices, जैसा कि हम इससे पहले देख कर आए हैं. कोई नई चीज़ उसमें नहीं है, लिहाजा मैं रिपीट नहीं कर रहा. ऑल राइट. जैसे हमने कहा था कि हमने इनिशियल स्टेट से आने की प्रोबेबिलिटी टू ईच ऑफ द मार्केट्स इक्वल रखी हुई थी, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इट्स बेटर दैट यू कीप इट 0.33 फॉर ईच ऑफ देम, बिकॉज आपकी एमिशन प्रोबेबिलिटीज़ जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ जितनी भी यहाँ से बाहर निकल रही हैं उनका सम 1 होना चाहिए. लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी एंड फॉर दिस स्टेट विच इज़ एन एक्सेप्शन, मैंने इन तीनों को 1 ले लिया था. All right, so this is the probability of reaching ये 1 1 1 तीनों जगह आ गई है of going to each of the markets, and then ये जो 0.80 है, this is the probability of buying a pet from the pet market. So of buying a pet from the pet market, and then similarly this one is the probability of buying a pet from the electronics market. So you can clearly see buying a pet from the electronics market and buying a pet from the food market. All right. So now from here we will construct all paths that go to this state and consume this this f at this stage. So let's see. So this is a max of these three 0.80 into, so max of three values, and we've just written the first one here. So this is 0.80 into 0.11 into 0.15. What are these? खुद से भी करने की कोशिश करें. 0.80 ये आ रही है, 0.11 ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ p given p ये कहाँ से आ रही है, 0.11 ये यहाँ से आ रही है, and then 0.15 is the probability of consumption of food at the pet market. So this is food at the
फेड मार्केट। ठीक है, आप लोग आई होप मेरे साथ हैं और आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा अब ज़रा स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूँ बिकॉज ये सब कुछ हम एक दफ़ा पहले बहुत डिटेल में करके आ चुके हैं। ऑलराइट, इस बात से आए तो ये प्रोबेबिलिटी आई, इस बात से आए तो ये प्रोबेबिलिटी आई, इन तीनों का मैक्स लिया तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। तो यस यू कैन सी इंस्टेड ऑफ जस्ट सम वी आर जस्ट यूजिंग अ मैक्स हियर। इनमें से जो मैक्स आया है वो किस बात से आया है? दिस इज द न्यू थिंग दैट वी हैव डन हियर। ये जो ब्लू बैक पॉइंटर यहाँ पर लगा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इन तीनों में से वो कौन सा पाथ था, ये था, ये था या ये था, कौन सा था जो मैक्सिमम हमें दे रहा था। वो याद रख लेना है कि यहाँ तक पहुँचने का बेहतरीन रास्ता ये ब्लू एरो से इंडिकेट हो रहा है जिधर से मैं आया हूँ। दीज आर द ब्रेड क्रम्स जो हमें वापस बैक ट्रैक करने के लिए आगे जाकर यूज करने। सिमिलरली यू फाइंड द 3 paths that reach here, you find the max of that and you place a back pointer, the 3 paths that reach here, and you find the max of reaching this point. All right, so now we can easily extend it to the next stage. So going here from this path, पिछली probability आ रही है, transition probability आ रही है, consumption probability आ रही है. All right, of these three, this was the best path. Of these three, this was the best path. Of these three, this was the best path. All right, and now going to the final stage. The first, the second, and the third, and of these three, this is the best path. Now we are in a position to basically, so now we know the maximum, the max अब हमें मिल चुका है, the maximum probability path जो इन सारे possible hidden paths में से जो max है वो हमें मालूम है कि वो ये है, इसकी वैल्यू इतनी है। अब वो पाथ है क्या, उसके लिए हमने सिर्फ बैक ट्रैक करना है यूजिंग द बैक पॉइंटर्स। तो यहाँ से ट्रैक करते हुए आप आइए यहाँ पर, तो सबसे पहला ये होगा, उसके बाद यहाँ से आप पॉइंटर को ट्रेस करते हुए पीछे जाएं तो उससे अगला ये होगा और उससे पीछे जाएं तो ये होगा। सो द बेस्ट hidden state sequence is P, E, and F. This is the best hidden state sequence given the observed sequence P, F, F. So I hope this is clear. I hope ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लीजिए। मैं ज़रा इसमें से कुछ थोड़ा सा क्लटर कम कर दूँ। लेट मी जस्ट रिमूव सम ऑफ द थिंग्स ताकि हम यहाँ पर कुछ बात कर सकें इसके बारे में। ऑलराइट, यहाँ पर एक बात ये ऑब्जर्व करें कि आपने हर कॉलम में आने के बाद, यानी हर स्मॉल t की वैल्यू के ऊपर आपने सारे पॉसिबल पाथ्स को आगे बढ़ाया है। सो आपने यहाँ पर तीनों जगह कंप्यूट किया था, यहाँ आने की बेस्ट प्रोबेबिलिटी, यहाँ आने की बेस्ट, यहाँ आने की बेस्ट, और फिर आगे जाने के लिए इन तीनों को यूज़ किया था। दिस मीन्स दैट इफ द नंबर ऑफ states are too many, if you have for example 65 phonemes, जब phonemes की बात करते हैं, या अगर ये words पर बना हुआ हो, हम आगे जाकर देखेंगे, तो अगर आपके पास पूरी vocabulary जितने words हैं, so this could be in thousands. So keeping all of them and taking all of them forward could be extremely time consuming. इवन की n इंटू टी है आपका, इस केस में n बहुत बड़ा हो जाएगा, और t तो जाहिर है वो तो सीक्वेंस है, वो तो बड़ा होता ही है। तो this could become very computationally costly very quickly. So what we do usually, and for being more practical about it, for being realistic, हम करते ये हैं कि हम इन सब को आगे नहीं लेकर जाते, हम इसमें से एक सबसेट को प्रून कर देते हैं। और ये वो अगला एल्गोरिदम है जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, जो विटेरबी के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम बीम सर्च कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, ये आपके पास लेट से 65 स्टेट्स हैं, आप इनमें से n बेस्ट स्टेट्स को चूज कर लें। सो अब उसको करने का यूजुअली जो तरीका है वो ये है कि you basically compute the most probable path या the most probable state at each column. So हर कॉलम में आने के बाद आप ये कहते हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है, इन तीनों में से, लेट से हमारे पास थे तीनों में से बेस्ट क्या है, या 65 थे तो 65 में से बेस्ट क्या है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि अब आपने then prune away any state that is worse than D by some fixed threshold theta. So आपने ये कहा कि D से कुछ फिक्स थ्रेशोल्ड नीचे तक के सब रख लो और उससे नीचे की बाकी सारी चीजें जो है ना प्रून कर दो। So this is known as, this theta is known as the beam width. ये आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। So you prune anything less than theta D. So for example आप कहते हैं 0.7, so anything which is less than 0.7 D उसको आप प्रून अवे कर देंगे। सो आप 30% चीज़ों को आपने जो है वो लेट से नीचे से प्रून अवे कर दिया और आपने बस 70% का यानी थ्रेशोल्ड लगा दिया डी से नीचे। तो अब ये वो पॉइंट है जो जिस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, और ये बीम विड्थ जो है ये अब आगे आप लेकर सिर्फ चलेंगे। सो एट ईच state you're just keeping an active list of states in each step of the algorithm.
इसको हम एक एक्सट्रीम पर भी पहुंचा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ इसमें से बेस्ट रख लें। अच्छा, ये अब जो चीज़ बनती जा रही है ये बहुत करीब आ रही है ए स्टार एल्गोरिदम के, विच इज़ बेसिकली अ डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिदम। लेकिन वहाँ पर हम कुछ थोड़ी सी और चीज़ें भी इसके साथ करते हैं। वहाँ पे समटाइम्स वी ट्राई टू यूज़, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट द मैक्स, वी ट्राई टू यूज़ द फुल फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी। तो खैर एनी हाउ, जब कभी उसकी ज़रूरत होगी किसी जगह तो अब आप इसकी बेस के ऊपर उसको पढ़ सकते हैं अपने तौर पर। यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द ए स्टार सर्च, यू आर ऑलमोस्ट राइट देयर। सो बीम सर्च और विटर्बी सर्च, ये अब आपको समझ में आ गई है कि क्या चीज़ होती है जो हम देख कर आए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, एंड आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ कि दिस इज़ बेसिकली अ कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन दैट वाज स्टार्टेड जब हमने सीक्वेंसेस को अलाइन करना शुरू किया था यूजिंग द वेरियस एल्गोरिदम्स जो उस वक्त हमारे पास थे। मिनिमम एडेड डिस्टेंस था, या नीडलमैन वुंश एल्गोरिदम था, या उसके बाद डायनेमिक टाइम वार्पिंग थी। वो डिस्कशन अब प्रोबेबिलिस्टिक डोमेन में आके अब मुकम्मल हो गई है। नाउ वी नो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अलाइनमेंट बिटवीन टू सीक्वेंसेस। एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर नोट की है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, इस पर भी गौर करना, कि अभी आपका जो हिडन मार्कov मॉडल था इसमें सारी स्टेट्स के साथ कनेक्टेड थी, यानी हर मार्केट से हर मार्केट में जाना मुमकिन था। यू कैन गो टू पेट मार्केट आफ्टर फूड मार्केट, यू कैन गो फ्रॉम फूड मार्केट टू इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, सो हर मार्केट से हर मार्केट में जा सकते थे। इट डज नॉट नीड टू बी लाइक दैट, and based on your corpus you can essentially prune away paths in the hidden Markov model itself। यानी आप ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर दा के बाद आ नहीं आता, या आ के बाद दा नहीं आता, या आ के बाद एन नहीं आता, तो आपने वो पाथ ही ख़त्म कर दिया जो इनके बाद है। या आप ये कह सकते हैं जी उर्दू के अंदर लेट से पा के बाद बा जोड़कर नहीं आता, या लेट से बा और बा का सीक्वेंस लेट से आपके पास अगर नहीं आता है तो आप खैर तीन को तो पकड़ना आपके लिए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर मार्कov मॉडल में मुमकिन नहीं होगा, उसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। बट अपने जहन में रखिएगा कि जब भी आप ट्राइफोन्स पे बेस्ड हुआ हुआ सिस्टम या ट्राइफोनीम से बेस्ड हुआ हुआ सिस्टम बना रहे हो, यू कैन ऑलवेज डू अ मोर इंटेलिजेंट प्रूनिंग लाइक दैट। हाउएवर उर्दू के अंदर वो सारे सीक्वेंसेस जो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किए अपनी कॉर्पस में, इफ़ यू हैव अ लार्ज इनफ कॉर्पस, इफ इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंग्वेज, उन सीक्वेंसेस को आप प्रून कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि इन एक्चुअल स्पीच रिकग्निशन वी प्रून अवे अ लॉट ऑफ सीक्वेंसेस before we start the training in order to make the process as efficient as possible। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रहे कि एक प्रूनिंग तो वो हो रही है जो हर स्टेप पे हो रही है विटर्बी में, एक प्रूनिंग वो भी हो रही है जो खुद आप HMM के अंदर जाकर कर सकते हैं, अपने HMM को छोटा कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कुछ स्टेट ट्रांजिशंस डू नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। All right, Janab. So now finally we are ready for the last and the biggest question। और जिस एल्गोरिदम से मैं आपको थोड़ा सा डराता हुआ आ रहा हूँ कि ये बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसान भी लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ बस एक बात याद रखिए, आप में से जो लोग कभी न्यूरल नेट्स पढ़ के आए हैं, तो अगर कभी आपने फॉरवर्ड प्रोपिगेशन और बैक प्रोपिगेशन पढ़ी हो तो मसला ये होता है कि कोई मुश्किल बात नहीं हो रही होती, इट्स जस्ट there are too many things। it's big, so you just need to keep a lot of things in your active memory कि because जो एक नोड पे हो रहा है वही सब में हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि नोड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से बाज़ दफ़ा we just get confused because of the lot of things which are happening। However, if you just observe the structure of what is happening तो सारा कुछ आसान हो जाता है। वही कुछ यहाँ पर भी है कि बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ टू कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट। और आप ऐसा करें कि जिस स्लाइड पे भी ये लगने लगे उससे पिछली स्लाइड पर वापस आएँ, थोड़ा सा रेस्ट लें और फिर वहाँ से दोबारा शुरू करें, एंड थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। द रीज़न आई क्रिएटेड दीज स्लाइड्स फॉर दिस बॉम वेल्च एल्गोरिदम वॉज कि अक्सर बॉम वेल्च जो है वो अवेलेबल नोट्स और बुक्स के अंदर क्लियरली नहीं लिखा हुआ होता। सो स्टूडेंट्स जस्ट वॉक आउट of the learning of hidden Markov models with very little understanding of how this amazing algorithm works. And this is basically a special case of a very powerful branch of algorithms which are known as expectation maximization algorithms, a branch of unsupervised learning algorithms या clustering algorithms। तो हम उसकी भी बात थोड़ी सी करेंगे जनरल टर्म्स में, EM की और EM की बात करके, साथ ही मैं बॉम वेल्च पे आ जाऊंगा, and then we'll look at the बॉम वेल्च algorithm in its entirety using the example that we constructed। ठीक है, अब मेरे साथ रहिएगा इन द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो, पूरी तवज्जो से कीजिएगा, कोशिश करें ऐसा टाइम चूज़ करें जब आप थोड़े से रिलैक्स हों, आपके दिमाग को ग्लूकोज मिला हुआ हो, इतना आपके पास बॉडी में ब्लड शुगर आपका हो कि आप इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकें। ऐसे टाइम पे ना कीजिएगा जब आप बहुत थके हुए हों या बिल्कुल बस ख़त्म करना चाह रहे हों या 3x की स्पीड पर सुन रहे हों। सो फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, फॉर द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो, bring the speed down. I recommend bring it down to 1x, and at the cost of being bored a little bit of the repetitions that I do, which are intended, um,
इंटेंशनली मैं रिपीट कर रहा हूँगा, लेकिन वो बर्दाश्त कर लीजिएगा ताकि आपको एक दफ़ा में ही, एक गो में ये सारा कुछ समझ में आ जाए. विद दैट, लेट्स बिगिन. Alright, so training the Markov models. The goal of this training is to learn the transition probability matrix given a sequence of observations. So हमारा गोल ये है कि हम एक sequence of observations use करते हुए learn करना चाह रहे हैं हमारी पूरी transition probability matrix को, और similarly हम emission probability matrices को भी train करना चाह रहे हैं. तो हमें given सिर्फ एक observation sequence है और कुछ भी नहीं मिला हुआ. अब हम करेंगे ये कि हम इसको ना थोड़ा step by step build करेंगे. सीधा मैं biggest problem आपकी तरफ throw नहीं करूँगा. I'll first give you smaller chunks of problems and that will solve together, and then we'll see कि in its entirety जब ये problem आती है तो इसको कैसे solve किया जाता है. Alright, so step by step चलते हुए, suppose पहले हम एक बहुत simplified example लेते हैं. ये आपके पास एक नीचे जो बना हुआ है, ये fully connected Markov model है जिसमें आपको 3 states नजर आ रही हैं, electronics market, pet market and food market. It's fully connected. आप हर state से हर state पे जा सकते हैं और हर state से वापस उस state के ऊपर भी आ सकते हैं. ठीक है. Suppose we already know the following state sequence. पहले से ही पता है कि आपने markets जो हैं वो किस तरह visit किए हैं. देखिए अब ये बहुत simplified example है, यानी असल problem में तो हमें नहीं पता ना, वो तो hidden है, लेकिन हम assume करते हैं कि वो hidden नहीं है. And we're given the state sequence and we need to train a fully connected Markov model. अभी ये तो hidden भी नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने इसका जो है वो क्या कहते हैं, emission probabilities की बात ही नहीं कर रहे. So this is just a Markov chain. इसको कैसे train करेंगे? अब अगर मैं आपसे कहूँ, और यहाँ रुकिए, सुनिए कि मेरा सवाल क्या है. सवाल ये है, ये ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस गिवन है एंड दिस ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस इज ऑफ द स्टेट्स, नॉट ऑब्जर्वेशंस. पेट खरीदा, फूड खरीदा नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गए, पेट मार्केट गए, पेट मार्केट गए, पेट मार्केट गए, पेट मार्केट गए एंड सो ऑन. ये है सीक्वेंस, सब कुछ पता है और ये मार्कॉव मॉडल गिवन है. अब आपसे सवाल ये है कि आप ये सारे के सारे एरोज के ऊपर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. कैन यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ P given E? Can you find out this? Can you find out this probability of E given P? Can you find the probability of E given E? Can you find all of these probabilities using this? Pause करें, खुद से निकालें before I give you the answer. Alright, you can very easily do this. You can do it using the relative counts, the relative frequencies. So the probability of going from state Si to state Sj, which is written as Aij, is simply the count of Si Sj divided by the count of Si. In other words, of all the times कि आप state Si से बाहर निकले, of all the times कि आप state Si से बाहर निकले, उनमें से कितनी दफ़ा आप state Sj में गए. This is essentially what you're counting. ये बहुत दफ़ा आप अब तक कर चुके हैं और अब आप hopefully इसके माहिर हो चुके हैं. So PEE going from E to E is just count of EE divided by count of E, which is 2/8. ठीक है, यहाँ से आप ऊपर इस सीक्वेंस में इसको काउंट कर लें. 2 दफ़ा आप E से E पर गए हैं और you can see it here कि एक दफ़ा यहाँ पर गए हैं और एक दफ़ा यहाँ पर गए हैं. Of all the times जो आप E से बाहर निकले हैं, तो E हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 दफ़ा आप E से बाहर निकले हैं, उनमें से आप सिर्फ 2 मरतबा वापस E पर आए. Probability of going from E to F, और मैंने यहाँ पे कंडीशनल के अंदाज से नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ सिंपल जॉइंट के अंदाज से लिखा हुआ है. तो probability of going from E to F is count of EF over count of E, and so on and so forth. So you calculate all of these probabilities and you train your Markov model. So I hope this is simple and this is clear to you. ऑलराइट, इसी प्रॉब्लम पर बिल्ड करते हैं. अब हमने पहले स्टेप में ये सीख लिया कि अगर खाली मार्कov मॉडल ट्रेन करना होता, सिर्फ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ट्रेन करनी होती तो कैसे करते. ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं. सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस. ये भी दिया हुआ है क्या खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, फूड खरीदा, पेट खरीदा, पेट खरीदा, पेट खरीदा, एंड देन एज वेल एज द हिडन स्टेट सीक्वेंस. कहाँ से खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से, फूड खरीदा, पेट मार्केट से, पेट खरीदा, पेट मार्केट से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सब दोनों सीक्वेंसेस गिवन है, यानी अलाइनमेंट ऑलरेडी हुई हुई है दोनों सीक्वेंसेस. कहां से क्या खरीदा. क्या इस प्रॉब्लम के लिए वी कैन ट्रेन अ फुली कनेक्टेड हिडन मार्कov मॉडल. ये ट्रेनिंग किस तरह होगी. अब देखिए, इस ट्रेनिंग का पहला हिस्सा तो बहुत सिंपल है. जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं, गोइंग फ्रॉम ई टू पी एंड पी टू ई एंड एफ टू पी, मार्केट से मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी, वो बिल्कुल उसी तरह आएंगी. गोइंग फ्रॉम स्टेट QI to state QJ की probability which is given in AIJ is simply the count of QI QJ over QI. यानी of all the times we went out of state QI, how many times we went to state QJ.
तो अब यहाँ मैंने इसको प्रॉपर जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ ही की नोटेशन में लिखा है, ताकि आपको पिछली स्लाइड में अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। इफ़ एनी स्टूडेंट इज स्टिल कंफ्यूज अबाउट एनीथिंग, आई वांट यू टू सी इट इन ऑल डिफरेंट वेज दैट दीज थिंग्स कुड बी रिटन एज। ऑल राइट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ई से वापस ई पर आने की प्रोबेबिलिटी। कैसे निकाली? काउंट ऑफ ई ओवर काउंट ऑफ ई। आपको ई कितनी दफ़ा यहाँ मिला है और कितनी दफ़ा आपको ई मिला है, और उससे आपकी ये प्रोबेबिलिटी निकले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये क्या चीज़ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, यानी ई से एफ पर जाने वाली जो ये ब्रांच है इसकी प्रोबेबिलिटी। सो इट इज़ द काउंट ऑफ ई एफ, कितनी दफ़ा आप ई से निकल के एफ में गए, डिवाइड बाय द काउंट ऑफ ई, यानी कितनी दफ़ा आप ई से निकले हैं ओवरऑल। सो दिस इज 2/8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज एंड यू ट्रेन योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ए ट्रेन हो गई। अब हम बी की ट्रेनिंग की बात करते हैं, एमिशन प्रोबेबिलिटी की। पॉज करें और सोचें कैसे करेंगे। आपके पास ये दोनों सीक्वेंसेस गिवन हैं। कैन यू फाइंड आउट कि आप ई को कैसे ट्रेन करेंगे, बी को कैसे ट्रेन करेंगे? ऑलराइट, ये अब आपके पास तीनों स्टेट्स हैं, ई, एफ और पी। इन तीनों के अंदर अब आपने एमिशन ऑफ ईच सिंबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर सोचे तो ये बहुत आसान है। Essentially what you want to do is you want to find out the probability of an observation given state. इस स्टेट में लेट्स से तीनों ऑब्जर्वेशंस की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, जिसको हम लिखते हैं बी के ओ टी, स्टेट क्यू के अंदर ऑब्जर्वेशन ओ टी की प्रोबेबिलिटी। इट इज सिंपली जितनी दफा आपने उस स्टेट में आकर वो वाला सिंबल देखा है, यानी इन अदर वर्ड्स जितनी दफा उस मार्केट से वो वाली चीज खरीदी है, डिवाइडेड बाय जितनी दफा आप उस मार्केट में आए। इन अदर वर्ड्स, the probability of E given the electronics market would simply be कि आपने कितनी दफ़ा E के पेयर देखें, ये न्यूमरेटर है आपका, E के पेयर, मैं पता नहीं सारे ढूंढ सकूंगा या नहीं, बट लेट मी ट्राई टू फाइंड एज मेनी एज पॉसिबल। ये ई के पेयर्स हैं, ये जितने मैंने मार्क किए हैं, जितनी दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी गई है, ये आपका न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? कितनी दफ़ा आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आए हैं। तो ये इतनी दफ़ा तो आई हैं जितने पेयर मार्क किए हुए, इनके अलावा हम यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं, 2 दफ़ा और आए हैं। तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ई गिवन द स्टेट ई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल आएगी, विच वुड बी जस्ट this is 1 2 3 4 5 6 divided by 8। ठीक है, अब इसको करके देख लेते हैं। ये आपके पास सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आई हुई हैं। लेट मी जस्ट क्लीन स्टफ अप अ लिटिल बिट। ऑलराइट, एंड नाउ यू कैन सी कि ये किस तरह से निकली हैं। कोई और एक और देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी, ये एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन ई, ये किस तरह से निकली है कि जितनी दफ़ा आपने ई में फूड खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, और एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं है, लिहाजा दिस इज 0/8। सिमिलरली पेट कितनी दफ़ा खरीदा है आपने, वो आपने यहाँ भी खरीदा है और वो आपने यहाँ भी खरीदा है, सो दिस इज 2/8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू डिवाइड, so in the numerator you have the total number of times कि उस मार्केट में वो चीज़ खरीदी हो, divided by the total number of times कि आप उस स्टेट में यानी उस मार्केट में आए हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो यहाँ तक पहुँच के अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस और हिडन सीक्वेंस दोनों गिवन हो तब कैसे ट्रेनिंग करनी है, लाइक द सिंपलेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। नाउ द रियल क्वेश्चन, जो असल प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, और अब पहले तो ज़रा वो और भी आना चाहिए ना हमारे अंदर के वो एक प्रॉब्लम की सही जो एक्सटेंट है उसको अप्रिसिएट तो करें कि प्रॉब्लम है कितनी बड़ी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Our goal is to learn A and B matrices given a sequence of observations only, of observations and a hidden Markov model lambda. कुछ नहीं पता कहाँ से क्या खरीदा है, सिर्फ ये पता है कि इस सीक्वेंस में चीज़ें खरीदी हैं और कुछ नहीं पता। सो अब आपने ये सब कुछ ट्रेन करना है, एमिशन प्रोबेबिलिटीज भी और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज भी। अब ये ए और बी ऑलरेडी पार्शली ट्रेन स्टेट में भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक भी हो सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता इनिशियली कहाँ से क्या खरीदा जाए। तो लिहाजा नाउ यू कैन अप्रिशिएट कि अच्छा फिर तो कहीं से कुछ भी खरीदा जा सकता है। दीज मार्केट्स डोंट मीन अ लॉट इन दिस केस, वी डोंट नो कि कहाँ कितनी दुकानें किस चीज़ की हैं, कुछ भी तो नहीं पता हमें। तो अब ये एक पूरी तरह से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, क्लस्टरिंग का एक एल्गोरिदम बन जाएगा यहाँ से आगे। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे कि पहले तो इस ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस में कुछ है भी सीखने का या नहीं, हम इससे स्टेट सीक्वेंस की कैसे इंफॉर्मेशन निकालें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या ऐसा तरीका करें कि हम इसको लर्न करें। तो देखें, पहले इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि इन इट्स करंट फॉर्म हमें क्या कुछ पता है। हमें ये पता है
कि मार्केट्स 3 है, ये भी बहुत बड़ा नॉलेज है। अगर आप बाज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स देखेंगे तो वहाँ पर ये भी नहीं पता होगा कि स्टेट्स हैं कितनी। यहाँ ये पता है मार्केट्स कितनी है, 3 है। ओके, दैट्स अ बिग नॉलेज दैट वी हैव। एंड वी ऑल्सो नो कि कितने पॉसिबल सिम्बल्स हैं। ऑल राइट, ये भी हमें पहले से मालूम है। और हमें ये भी मालूम है कि ये एक ऐसा सिंबल्स का सीक्वेंस है जो कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है गिवन दिस हिडन मार्कov मॉडल, यानी गिवन दिस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ये सीक्वेंस में चीजें खरीदी गई हैं। गिवन उर्दू की फोनीम्स, ये वाला सीक्वेंस बोला गया है फ्रेम्स का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? So what can we learn just from a sequence of observations? So the first thing that we can learn from it is that it's a sequence of events that actually happened in the system represented by the HMM. Therefore, these are all possible events. यही बहुत बड़ी बात है कि हमें पता लग गया है एक बहुत बड़े डेटा में। यूजुअली these are huge data sets जो हमें मिल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 परिंदे खरीदने और 2 टीवी खरीदने की ऑब्जर्वेशन है। These might be like hundreds of thousands of events जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, जो चीज़ें बहुत से लोग गुजरे या एक ही शख्स ने ओवर सेवरल ईयर्स जो खरीदारियाँ की हैं, ये उसका सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल समवन बॉट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, और किसी और ने एक और सीक्वेंस, किसी और ने एक और सीक्वेंस, वो सब आपके पास मौजूद है। And the second thing that you know from this sequence is the frequency of the events in this sequence tells us how probable these events and their underlying paths are. आपको ये भी पता है कि एक चीज़ें बार बार खरीदी जा रही हैं, एक चीज़ एक ही दफ़ा नहीं खरीदी गई है, तो ये फ्रीक्वेंसीज भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होंगी कि ये किस पाथ से ये चीज़ें खरीदी गई हैं। सो पहली चीज़ तो अब ये वेग सा इमेज अब जहन में बनना शुरू हो जाना चाहिए कि अच्छा इस सीक्वेंस में कुछ तो है जिससे मैं ये सीख सकता हूँ कि कहाँ से खरीदा गया है। ठीक है, और ये भी पता है मार्केट्स कितनी। ठीक है, ये हो सकता है कि इस पूरी लर्निंग के आखिर में जो काम पेट मार्केट में होना था वो पी के लेबल की जगह वो किसी और लेबल पे उसको फिट कर दे, विच इज़ फाइन। दीज आर जस्ट 3 मार्केट्स, दे डोंट नीड टू हैव नेम्स, दीज आर जस्ट 3 एनी 3 मार्केट्स। और ये सिंबल्स किसी एक पर कॉन्सेंट्रेट करके अगर लर्न कर लेते हैं और वो नाम कोई और बन जाता है तो दैट्स फाइन टू। वी जस्ट नीड, वी आर इंटरेस्टेड इन दीज 3 क्लस्टर्स एट दिस पॉइंट। और ये बात अभी और क्लियर होती जाएगी। इसके लिए जो हम बेसिक टेक्निक यूज करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग की, उसको हम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। अच्छा, आप में से जो लोग मशीन लर्निंग मुझसे पढ़ के आए हैं वो ये जानते हैं कि ये ईएम क्या होता है, आपको सेमेस्टर के आखिर में पढ़ाया भी गया था। लेकिन आपने एक और चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि स्पीच के कोर्स के अंदर वी आर डूइंग machine learning in simpler words. So rather than going into the mathematical and theoretical details of each and every algorithm, we are trying to run it. We are getting a more practical knowledge of these algorithms. तो वहाँ जिस तरह से आपने पढ़ा था उससे ज़रा हट के मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आपके लिए भी ये रेलिवेंट है, आप भी दोबारा सुन लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑल राइट, सो EM या एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन का जो बेसिक आइडिया है, जो उसकी इंट्यूशन है, वो ये है दैट यू स्टार्ट you choose a starting guess of averages of each cluster. So आपने क्लस्टरिंग करनी है, आपने अपने गिवन डेटा को कुछ सेट ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड करना है। सो आप इसमें करते ये हैं कि आप कोई स्टार्टिंग गेस ले लेते हैं, दैट कुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, इक्वल फॉर ऑल क्लस्टर्स, इट कुड बी आई डोंट नो जीरो इन सम केसेस, कभी जीरो अप्रोप्रिएट होता है कभी नहीं होता, वो एक अलग बहस है। लेकिन खैर, यू स्टार्ट फ्रॉम सम इनिशियल गेसेस एंड यू रिपीट अंटिल आपकी जो इटरेशंस हैं उसमें क्लस्टर्स की डेफिनेशन और उन क्लस्टर्स के मेंबर्स चेंज होना बंद हो जाएं या मिनिमाइज हो जाएं, चेंज ना हो रहे हो। सो आप चेंज यानी इटरेशन पे इटरेशन किए जा रहे हैं और क्लस्टर बस जो बन गए हैं वो बन गए हैं, वो हिल नहीं रहे अपनी जगह से, उनके मीन्स वगैरह चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। EM के अंदर 2 स्टेप होते हैं, द E स्टेप जिसमें आप इंडिविजुअल्स को लेबल करते हैं, एंड द M स्टेप जिसमें आप उन इंडिविजुअल्स के लेबल्स की बेस पर कलेक्टिव की डेफिनेशन को चेंज करते हैं। अब ना मैं क्या करूंगा, मैं भी आपको पढ़ाने में EM यूज़ कर रहा हूँ। मैं हर दफ़ा जब इस जुमले को रिपीट करूंगा तो मैं थोड़ा सा और इसको खोलता जाऊंगा कि हम क्या करने लगे। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर ईच पॉइंट, फॉर ईच इंडिविजुअल, you find the probability of membership in each cluster. That could be your E step. आपने हर एक इंडिविजुअल के ऊपर ये कहा कि अच्छा ये फ्लां क्लस्टर से बिलोंग करता है, ये फ्लां से करता है, ये फ्लां से करता है, ये डिस्टेंस की बेस पर भी हो सकता है, ये किसी और तरह से प्रोबेबिलिटी से भी आ सकता है। सो आपके पास जो है वो लेट्स से 100 पॉइंट्स हैं और 3 क्लस्टर्स हैं। आपने हर पॉइंट को पहली दफ़ा जाकर कहा कि तुम फ्लां क्लस्टर से बिलोंग करते हो, तुम फ्लां से करते हो, तुम फ्लां से करते हो, तुम फ्लां से करते हो। सबके हाथ में फर्ज करें आपने ये लेबल पकड़ा दिए कि तुम किस क्लस्टर से बिलोंग करते हो। एंड इन द M स्टेप, इन द सेकेंड स्टेप, जो मेंबर्स असाइन हुए हुए हैं एक क्लस्टर को, उन सारे मेंबर्स को जिनको अभी हमने ई स्टेप में असाइन किया है, उनकी बेस के ऊपर इस क्लस्टर की नई डेफिनेशन असाइन कर लें। सो क्लस्टर की डेफिनेशन ये भी हो सकता है मीन ऑफ द क्लस्टर ले रहे हो, उसकी हम कोई एवरेज और वेरिएंस वगैरह ले रहे हो, जो कुछ भी उसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपडेट कर दी जाएगी। नाउ यूजिंग दिस न्यू डेफिनेशन वी रन अनदर इटरेशन ऑफ द EM एल्गोरिथम।
सो अब इस नई डेफिनेशन से फिर दोबारा से आप सारे के सारे इंडिविजुअल्स पे जाएंगे और उनको दोबारा एक एक क्लस्टर असाइन करेंगे और फिर दोबारा M में आएंगे और दोबारा क्लस्टर की डेफिनेशन को चेंज करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सप्लेन करूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स हैं और मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए कि ये 1 और ये 2 और ये 3 क्लस्टर्स हैं और उसके बाद मैं ई स्टेप के अंदर चलना शुरू करता हूँ और मैं करता ये हूँ कि ई स्टेप में जाकर मैं हर इंडिविजुअल को किसी एक क्लस्टर में असाइन कर देता हूँ। अब ये असाइनमेंट ये भी हो सकती है कि मैं इसके सारे फीचर्स का डिस्टेंस निकाल लूँ। इट कुड बी लाइक आई डोंट नो यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस और इट कुड बी सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी और असाइन कर दूं इनको। सो द ई स्टेप, लेट्स से मैं पहली दफ़ा ई स्टेप चलाता हूँ। ई स्टेप में क्या होगा, अब मैं जिसको येलो को असाइन कर रहा हूँ मैं उसको येलो करता जाता हूँ। सो लेट्स सी इफ आई कैन डू इट। सो फर्ज करें ये मैंने येलो को असाइन कर दिया। व्हाई इजंट इट मार्किंग एनी कलर? ओके, लेट मी जस्ट यूज दिस। सो इसको मैंने येलो को असाइन कर दिया, इसको मैंने येलो को असाइन कर दिया, इसको मैंने लेट्स से येलो को असाइन कर दिया, इसको मैंने येलो को असाइन कर दिया एंड देन जो जो ग्रीन से करीब थे उनको मैंने ग्रीन असाइन कर दिया। फ़र्ज करें इन दो को ग्रीन असाइन हो गया और जो जो ब्लू से करीब थे उनको मैंने ब्लू असाइन कर दिया और वो ब्लू क्लस्टर के मेंबर बन गए। ठीक है, ये डिस्टेंसेस की बेस पे भी हो सकता है, ये किसी और चीज़ की बेस के ऊपर। वंस आई डू दिस आई एम डन विद द ई स्टेप। नाउ आई एम इन द एम स्टेप। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर क्लस्टर के जो नए नए मेंबर बने हैं, फॉर एग्जांपल येलो क्लस्टर के मेंबर्स जो हैं वो ये वाले हैं, इन सब के फीचर्स का जो भी हमने इस क्लस्टर की डेफिनेशन ली हुई थी, लेट्स से मीन लिया हुआ था हर फीचर के क्रॉस या जो कुछ भी लिया हुआ था, उसकी बेस पर इसकी डेफिनेशन को अपडेट करेंगे। लेट्स से इट हैज़ अ न्यू मीन नाउ एंड इसी तरह से ग्रीन का एक नया मीन बन जाएगा जो ग्रीन वाले पॉइंट्स की बेस पर होगा और इसी तरह से ब्लू का एक नया मीन बन जाएगा जो ब्लू के पॉइंट्स की बेस के ऊपर होगा। सो नाउ वी हैव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ दीज क्लस्टर्स। हो गया, एक दफ़ा एम भी पूरा हो गया। नाउ वी गो बैक टू द ई यूजिंग दिस न्यू सेंटर्स या न्यू एवरेजेस। अब दोबारा हर इंडिविजुअल के साथ फिर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे और नई मेंबरशिप्स देंगे। अब हो सकता है कुछ की मेंबरशिप्स बदल जाएं, नए डिस्टेंसेस की बेस पर कुछ ब्लू ग्रीन हो जाएं, कुछ येलो ब्लू हो जाएं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस ई स्टेप के बाद जब दोबारा एम स्टेप पे आएंगे और जो नए नए मेंबर मिले हैं उनकी बेस के ऊपर डेफिनेशन अपडेट करेंगे तो योर क्लस्टर्स में चेंज अगेन until eventually these changes will become initially slow and then eventually the changes will stop. Once that happens, you say that now the algorithm has converged. The question is, has it converged correctly? What does even correct mean? Not necessarily. सो EM एल्गोरिदम के अंदर वो प्रॉब्लम ऑफ लोकल मिनिमा, जो आप में से जो अवेयर हैं, जो मशीन लर्निंग कभी ना कभी या AI वगैरह पढ़ के आए हैं, द प्रॉब्लम ऑफ लोकल मिनिमा या बाज़ केसेस में जहाँ मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं लोकल मैक्सिमा की जो प्रॉब्लम है वो इसमें आती है। यानी जो आपका आंसर है, इट मे नॉट बी द ग्लोबल बेस्ट आंसर, इट मे बी जस्ट अ लोकल बेस्ट आंसर। इट्स अ बेटर आंसर, इट्स नॉट द बेस्ट आंसर, ये हो सकता है। और इट कुड हैव बीन कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हम कहा करते हैं। पहली चीज़ ये कहा करते हैं कि हम इस EM एल्गोरिदम में जो इनिशियल वैल्यूज से सेट आउट करते हैं, यानी जो इनिशियल डेफिनेशंस ऑफ क्लस्टर्स है और इनिशियल जो असाइनमेंट हुई हुई है मेंबर्स को, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो द प्रायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रायर्स थोड़े बहुत भी अच्छे ट्रेन हुए हुए हैं तो ये अच्छी जगह कन्वर्ज कर जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर जस्ट से इट हियर एंड वी प्रूव इट इन आवर कोर्स ऑफ मशीन लर्निंग कि you are not always looking for the global minimum or maximum. Sometimes the global minimum or maximum could be misleading and it could just mean that you're overfitting to a particular data set. So हम थोड़ा सा generalize करने के लिए जो बहुत ज़्यादा perfect minimas और maximas हैं, चाहे वो यानी बारीक सी ravines जो होती हैं, बारीक सी जो valleys और जो आपकी peaks होती हैं, उनको avoid ही करते हैं, उनको हम prefer नहीं करते। ये जुमला मैंने explain नहीं किया, ये मैंने सिर्फ बोल दिया है कि local maximum बाज़ दफ़ा ही is what we are looking for. इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट आवर मशीन लर्निंग लेक्चर्स या किसी और के मशीन लर्निंग लेक्चर्स में आप जाकर इसको ढूंढ सकते हैं। ये हिस्सा कवर किया जाता है यूजुअली एज पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको EM की इंट्यूशन मिल गई, एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो सपोज वी वांट टू क्लस्टर आवर क्लास इनटू 2 क्लस्टर्स बाय हाइट। हम आपकी पूरी क्लास में, और जब मैं असल में पढ़ा रहा होता हूँ आमने सामने तो मैं एक्चुअली करवाता हूँ, मैं आप में से 10-12 को बुला के सामने खड़ा कर लेता हूँ। एज्यूम कर लें मैंने आप में से 10-12 को बुला के क्लास के बाकी 70 स्टूडेंट्स के सामने खड़ा कर दिया। ऑलराइट, एंड वी वांट टू क्लस्टर आवर क्लास इनटू 2 क्लस्टर्स बाय हाइट। अब ये एक एक्चुअल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ EM की।
करना क्या है, यू स्टार्ट विद 2 रैंडम क्लस्टर्स से, उनको कोई भी इनिशियल आपने वैल्यूज दे दी, आपने एक बहुत कम हाइट की वैल्यू दे दी 4 फुट और एक बहुत लंबी हाइट की वैल्यू दे दी 60 फुट फॉर एग्जांपल आपने। अब फर्ज करो आप ये भी दे सकते थे 0 और 0, शायद वो इतनी अच्छी डेफिनेशन ना होती, शायद 4 और 4 इतनी अच्छी डेफिनेशन ना होती, लेकिन 4 और 7 जो दो एंड पॉइंट्स की तरफ चली गई है शायद बेहतर डेफिनेशन है। सो द इनिशियल वैल्यूज need to be intelligently chosen. Otherwise, there is a high probability that your algorithm may not converge to the right kind of clusters. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसके भी तरीके होते हैं, वो हम जब कभी के मीन्स डिटेल में पढ़ रहे होते हैं तो आपको पढ़ाते हैं कि उसके लिए भी बहुत से फिर तरीके हैं कि यू बेसिकली री इनिशलाइज एंड देन यू ट्राई कन्वर्जिंग अगेन, और कई दफ़ा की कन्वर्जेंसेस के बाद आप अपने क्लस्टर्स को डिफाइन करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयर आर वेज ऑफ डूइंग बेटर एट फाइंडिंग दीज मिनिमास. अच्छा जनाब, हमने यहाँ पर क्या किया, दो रैंडम क्लस्टर्स चूज किए, दो उनकी इनिशियल डेफिनेशंस बना दी. In the E step, you assign all the students to one of the clusters based on distance. So, for example, एक student है, उसकी height है 5 फुट 7 इंच और वो 1 foot and 5 inches away है from the 7 foot cluster. एंड वो 1 फुट 7 इंचेस अवे है फ्रॉम द 4 फुट क्लस्टर. सो देयरफॉर जिससे वो करीब है हमने उस क्लस्टर को उसको असाइन कर दिया, यानी हमने उसको 7 फुट क्लस्टर में असाइन कर दिया. इसी तरह ये यहाँ पे हमने सिंपल डिस्टेंसेस लिए हुए हैं उनके कि जिससे वो ज़्यादा करीब है. तो हर स्टूडेंट को एक क्लस्टर असाइन हो गया, तुम 4 फुट क्लस्टर के हो, तुम 4 फुट क्लस्टर के हो, तुम 7 फुट क्लस्टर के हो, तुम 7 फुट क्लस्टर के हो. एवरी स्टूडेंट इन द क्लास गेट्स असाइन टू वन ऑफ दीज टू क्लस्टर्स. ठीक है, अब एम स्टेप में क्या होगा, जितने स्टूडेंट्स को जो क्लस्टर असाइन हुआ है, फॉर एग्जांपल जितने स्टूडेंट्स को ई स्टेप 4 फुट क्लस्टर असाइन हुआ है, उन सब की एक्चुअल हाइट्स को यूज करते हुए वी recalculate the mean of the 4 foot cluster, and similarly we recalculate the mean of the 7 foot cluster based on all of the students who were given the label of 7 foot, उनकी एक्चुअल हाइट्स को यूज करते हुए. सो इससे क्या होगा, 7 फुट क्लस्टर हो सकता है नीचे आ जाए, कुछ 6 फुट 3 इंच बन जाए, 4 फुट क्लस्टर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, फॉर एग्जांपल 5 फुट 2 इंच बन जाए. आमतौर पर ये एल्गोरिदम पहले स्टेप में बहुत ज़्यादा जंप किया करता है, पहले चंद स्टेप्स के अंदर, एंड देन इवेंचुअली इसकी वो जंपिंग बहुत स्लो होती जाती है अगर कन्वर्जेंस मिलने लगे, एंड देन इट कन्वर्जेस टू पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ दीज क्लस्टर्स. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डज द EM algorithm mean, what's the intuition of it, and how does it work. All right, so K-means clustering is a typical example of EM algorithm. ये उसकी यानी basically बिल्कुल उसी तरह ये proceed करता है जिस तरह से EM proceed करता है. So you guess some initial cluster centers जिसमें हम basically centroids लिया करते हैं. You repeat until convergence. So E step में assign points to the nearest cluster center, and M step में set the cluster centers to the mean of all the members जो कि उस cluster को assign हुए हैं. ठीक है, ये आपके सामने एक ये ऊपर वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये लिया है, ये उसकी एक एग्जांपल आ रही है. सो आपके पास ये पॉइंट्स हैं जो ग्रे में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पास पॉइंट्स हैं, और आपने ये जो ग्रीन पर्पल येलो और ब्लू नज़र आ रहा है ये आपके रैंडमली असाइंड इनिशियल क्लस्टर्स हैं. ये आपने इनिशियल क्लस्टर सेंटर असाइन कर दिए हैं, कहीं पर भी आप देख रहे हैं ये एक ही में पड़े हुए हैं इस वक्त सारे. पहली दफ़ा अब ये ई स्टेप हुआ, ई स्टेप में आप ये देख सकते हैं कि हमने जिससे वो करीब थे इन सबको ब्लू कर दिया है, इन सबको ग्रीन कर दिया है, ये सब बीच में पर्पल हुए, ये सब पर्पल हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब येलो हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, इसकी बेस के ये ई स्टेप में असाइनमेंट हुई है. सो यू इन द ई स्टेप यू असाइन लेबल्स टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, एंड इन द एम स्टेप, और यहाँ पे आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ किया. ठीक है, एंड इन द एम स्टेप आपने क्लस्टर डेफिनेशंस चेंज कर दी हैं और वो डेफिनेशंस चली गई हैं उन, यानी इस पर्पल के सेंटर में जो है वो पर्पल आ गया है, ग्रीन के सेंटर में ग्रीन चला गया है, ब्लू के सेंटर में ब्लू चला गया है, येलो के सेंटर में येलो चला गया, और ये आपका एम स्टेप मुकम्मल हो गया. नाउ यूजिंग दीज न्यू क्लस्टर्स you reassign cluster membership to each of the points, and you can see कि आपकी बार कोई इतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं आई. ज़्यादा बड़ी तब्दीली जो आई है वो इस एरिया में आई है जहाँ पहले कुछ वो पर्पल सा था और अब वो येलो हो गया पूरा का पूरा. ठीक है, यहाँ तब्दीली आई, एंड देन यू बेसिकली अपने क्लस्टर की डेफिनेशंस अपडेट की, एंड देन इन द थर्ड स्टेप हार्डली एनी चेंज अकर्स, एंड वी फील कि जी इस और इस स्टेप के बीच में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं मेरे क्लस्टर सेंटर्स में, देयरफॉर वी हैव रीच्ड कन्वर्जेंस एंड दिस इज माय फाइनल क्लस्टरिंग. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है. के मीन्स के अंदर हम किसी एक मेंबर को आइदर और के अंदाज में असाइन करते हैं, यानी ईच मेंबर इज असाइन टू वन एंड ओनली वन क्लस्टर. एक मेंबर का एक ही क्लस्टर होता है. सो के मीन्स जो है ना वो बेसिकली जो बनाता है वो इस किस्म के हार्ड दायरे बनाता है. ये मेंबरशिप के दायरे हैं जो कि ओवरलैप नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट इसमें भी इंक्लूडेड हो और इसमें भी इंक्लूडेड हो.
पहली बात। और दूसरी चीज़ कि ये इस तरह के सर्कल्स या स्फीयर्स बनाता है, यानी इसके अंदर जो है वो हर डिमेंशन के अराउंड जो है वो डिस्टेंस एक जितना एक तरह से कैलकुलेट हो रहा होता है, बिकॉज वी टिपिकली यूज़ यूक्लिडियन डिस्टेंसेस हियर। तो यहाँ पे वेटेड नहीं होता अलॉन्ग डिफरेंट डिमेंशंस कि हम डिफरेंट वेट्स यूज़ कर रहे हो। खैर इसकी ज़्यादा तफसील अगर पढ़नी हो, इसकी भी बड़े फ्लेवर्स हैं ये के मीन्स के भी, तो मैं खाली आपको बेसिक के मीन्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे बेहतर करने के लिए वी कैन ऑल्सो मेक दिस मेंबरशिप प्रोबेबिलिस्टिक रादर देन मेकिंग इट डिटर्मिनिस्टिक, कि ये मेंबरशिप किसी एक से, जिससे मैं क्लोजेस्ट हूँ मैं उससे बिलोंग करता हूँ, और अगर मैं दो से इक्वल डिस्टेंस पे हूँ तो मैं आई फ्लिप अ कॉइन और मैं एक को बिलोंग कर लूँगा। बजाय इसके आई कैन जस्ट फॉर ईच मेंबर आई कैन आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी that this member belongs to cluster 1, what's the probability that this member belongs to the same member belongs to cluster 2, what's the probability that this belongs to cluster 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खड़े होकर मैं पूछ सकता था व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि ये जो पॉइंट है ये ग्रीन से बिलोंग करता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस probability of belonging of this like this point, let's say P belonging to the green cluster, the probability of this point belonging to the blue cluster, and so on and so forth। मैं सारी probabilities निकाल सकता था, और इन probabilities की बेस के ऊपर मैं means और variance define कर सकता था अपने सारे के सारे clusters के। जब हम ये कर रहे होते हैं तो इसको फिर हम कहते हैं Gaussian mixture models। So Gaussian mixture models के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि rather than assigning a point to a cluster, हम ये कह रहे हैं we are finding the probabilities of membership of a particular point to a cluster। So choose starting guesses for the location and shape, ठीक है, of the clusters, कहाँ पर उसका mean है और उसकी variance कितनी है। You repeat until convergence, each step for each point find weights encoding the probability of membership in each cluster। So हर point का आप एक weight ढूंढ रहे होंगे कि कितनी membership है इसकी हर cluster के अंदर। हो सकता है किसी में 0 के बहुत करीब हो, किसी में वो 90 के यानी 0.9 के कहीं करीब करीब बैठा हुआ हो, so it's perfectly fine। And then in the M step, for each cluster update its location, normalization and shape based on all data points, making use of the weights। So अब सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को यूज करते हुए इसका न्यू मीन और न्यू वेरिएंस आपने निकाल ली और ये आपके न्यू क्लस्टर बन गए। सो जीएमएम्स कुछ इस तरह से आपके चल रहे होते हैं, जहां पे अब आप देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप। ये वाला पॉइंट इससे भी बिलोंग करता है और इससे भी बिलोंग करता है। अगर देखा जाए तो ये बिलोंग इन बाकी दो से भी करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, इसलिए आपको वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। इट कुड बी क्लोज टू जीरो और इवन जीरो, ठीक है, गिवन द जितना आपके पास डेटा मौजूद है आपके डेटा सेट के अंदर। सो ये जनाब हमारे पास गाउसियन मिक्सचर मॉडल्स आ गए। बहुत हाई लेवल पे अभी हमने इसको देखा है, इसकी हम तफसील में नहीं गए हैं। यहाँ पर ये भी मुमकिन है कि हमारे जो क्लस्टर्स हैं वो इस तरह से इलिप्टिकल हों, ये भी मुमकिन है डिफरेंट डायमेंशंस के अलॉन्ग डिफरेंट हम वेट्स दे रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम मेंबरशिप जब देख रहे हैं तो डिफरेंट फीचर्स के अलॉन्ग डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो सकती है मेंबरशिप की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट खैर अभी के लिए हमें सिर्फ इतना चाहिए कि दिस जीएमएम क्लस्टरिंग वुड बी बेस्ड ऑन अ प्रोबेबिलिस्टिक counterpart of the k-means clustering, ठीक है। और ये GMM ही हम यूज़ करेंगे जिस वक्त हम आगे बढ़ेंगे और हम जाकर देखेंगे हमारे acoustic features को किस तरह से the probability of finding a particular frame given a particular phoneme, ये वाली जो probability थी ये हम GMMs के थ्रू ही cluster करके find करेंगे। So now we have looked at the basic intuition of this whole process of doing unsupervised learning। अब हम ready हैं अटैक करने के लिए Baum-Welch एल्गोरिथम पर। जनाब, तो इस एल्गोरिथम के दो नाम हैं, दो मशहूर नाम हैं, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिथम और दूसरा इसका नाम है Baum-Welch एल्गोरिथम। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। बिल्कुल उसी तरह से ही है। अब बेसिक इंट्यूशन देख लीजिए कि इसका जनरल आइडिया क्या है, जो कि बहुत उससे मिलता जुलता है जो अभी इससे पहले हम देखते हुए आए हैं। The way we find the way we train the probability, the transition probability aij, which is essentially the probability of going from state I to state j, any probability of state j given state I is just the expected number of transitions from state I to state j divided by the expected number of transitions out of state I। So rather than the number of transitions from state I to state j and then divided by number of transitions out of state I के बजाय हम expected number कह रहे हैं। अब ये हमने ढूंढना है कि ये कैसे निकलेगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं स्टेट आई से स्टेट जे की, और क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं आउट ऑफ स्टेट आई, ठीक है। ये नंबर अब किसी तरह से हमने ये एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। Similarly, to find the probability, the emission probabilities BJVK, which is the probability of the symbol being VK, यानी आपका symbol for example electronics था जो आपने ख़रीदा था observation T के ऊपर,
इन द स्टेट जे गिवन द स्टेट जे, ये आपकी जो एमिशन प्रोबेबिलिटी है यानी स्टेट जे के अंदर वी के खरीदने की प्रोबेबिलिटी, ये आप कैसे फाइंड करेंगे? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन वी के अकर्स इन स्टेट जे, बिल्कुल सेम चीज़ जो पहले की थी, बस ये एक्सपेक्टेड का इजाफा हो गया। हमने वहाँ कहा था नंबर ऑफ टाइम्स आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, अब हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, divided by expected number of times in the state Sj, in expected number of times let's say in the electronics market. अब ये दो एक्सपेक्टेड नंबर्स, ये सारे एक्सपेक्टेड नंबर्स फाइंड करने के लिए वी नीड टू डिफाइन सम न्यू प्रोबेबिलिटीज. सो वी डिफाइन two new types of probabilities. The first one is called the psi, जिसको हम psi या psi लिखते हैं, and we pronounce it psi or psi, and the other is gamma. So psi और gamma अगर आपकी समझ में आ गई ना, तो बस पूरा आपको बॉम वेल्थ समझ में आ गया, फिर आगे उसमें और कुछ नहीं है. तो आप पूरी तवज्जो से अगली स्लाइड में मुझसे ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि psi क्या है और gamma क्या है, और अगर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी सही से समझ आ गई थी तो ये दोनों तो बिल्कुल आसान तरीन चीज़ है समझने में. लेट्स बिगिन. ऑल राइट जी. सो द psi t I j, psi t का मतलब है हम इस वक्त अपनी ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस में पॉइंट t पर खड़े हैं, I स्टेट I से जा रहे हैं स्टेट j के अंदर, इज द probability of being in state I at time t and in state j at time t plus 1. इसका क्या मतलब है? एक पूरे का पूरा हमारा ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस कंज्यूम हुआ है. वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि जिस वक्त आप टीएथ सिंबल कंज्यूम कर रहे थे तो आप स्टेट आई में थे, जिस वक्त आप बर्ड खरीद रहे थे, पेट खरीद रहे थे, तो आप लेट्स से पेट मार्केट में थे, और उसके बाद जिस वक्त आपने लेट्स से फूड खरीदा तो आप फूड स्ट्रीट में चले गए. इस चीज़ की और फिर आगे पीछे बिल्कुल उसी तरह है कि आपने सब कुछ कंज्यूम किया है, ओ वन से लेकर ओ टी माइनस वन और ओ टी प्लस टू से लेकर ओ टी तक आपने सब कुछ कंज्यूम किया है इन द नॉर्मल मैनर जिस तरह से आप कंज्यूम करते हैं. ये प्रोबेबिलिटी निकालने का नाम है psi t I j. ये प्रोबेबिलिटी psi t I j, इसको बेशक पॉज करके थोड़ा सा अपने आप को इस पे कन्विंस कर लें. ये आपको दे रही है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट j. कैसे निकल रही हैं ये वाली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, अब ये देख लेते हैं. अब मुझे एक एक करके ज़रा बताइए. पूरे का पूरा O1 से OT माइनस वन कंज्यूम करके OT को कंज्यूम करना SI के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट्स एसेंशियली जस्ट द फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी जो कि पूरा का पूरा कंज्यूम करके OT को कंज्यूम करवाए SI के अंदर. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मैं SJ से शुरू करूं, मैंने यहाँ कंज्यूम कुछ नहीं किया, यहाँ से शुरू करके बाकी सारे का सारा OT प्लस 2 से OT तक का सीक्वेंस कंज्यूम करना है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज एसेंशियली जस्ट द बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट? यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है जो अभी तक केटर नहीं हुई है? वो AIJ है. और यहाँ पर OT प्लस वन कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो BJ OT प्लस वन है. चार चीज़ें हो गई. शुरू से शुरू करके SI पर आने की प्रोबेबिलिटी और OT कंज्यूम कर लेने की प्रोबेबिलिटी फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक की. SI से SJ पर जाने की प्रोबेबिलिटी AIJ है. SJ के अंदर OT प्लस वन को कंज्यूम कर लेने की प्रोबेबिलिटी BJ OT प्लस वन है. और फिर SJ से शुरू करके OT प्लस टू से लेकर कैपिटल T तक का सारा कंज्यूम करना, ये बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी है एट दिस पॉइंट SJ. अगर ये सब समझ में आ गया आपको तो अब बस कहानी तकरीबन ख़त्म हो गई. सो दिस coming here and ending in this state is essentially just the alpha ti, the forward probability of being in the tth index in the observation sequence and the ith state in the state sequence. ठीक है, यानी आपने OT को कंज्यूम किया है SI के अंदर, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कहलाएगी बेटा टी प्लस वन, क्योंकि आपको याद है कि टी प्लस वन, बेटा टी प्लस वन का मतलब है कि इसने जो पहला सिंबल कंज्यूम करना है वो टी प्लस टू करना है, ये वाला सिंबल कहीं पहले कंज्यूम हुआ है. सो बेटा टी प्लस वन जे का मतलब ये है कि जे से शुरू करेंगे आप इन द सीक्वेंस एट द सीक्वेंस नंबर टी प्लस वन, और यहाँ से आगे सारे के सारे आप सिंबल्स कंज्यूम कर लेंगे. दिस इज द बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा टी प्लस वन जे. समझ में आ गया? तो चार चीज़ें हो गई, 1 2 3 and 4. These four probabilities will help us construct this overall psi t ij. Alright, psi t ij is the probability of being in state I at time t and in state j at time t plus 1. So psi t ij, पूरी तवज्जो मेरे साथ, psi t ij is the probability of consuming O1 to OT minus 1. पहली चीज क्लियर हो गई. It's the probability of consuming O1 to OT minus 1 and then OT consuming OT using SI.
ये फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई पूरी की पूरी। एंड देन OT+1 यूजिंग SJ, ये आपको BJ OT+1 मिल गया। एंड देन ऑब्वियसली बीच में ट्रांजिट की प्रोबेबिलिटी है गोइंग फ्रॉम आपकी स्टेट जो है वो SI टू SJ, एंड देन कंज्यूमिंग OT+2 टू OT। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग O1 टू OT, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग ऑल ऑफ दीज सिंबल्स, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस। ये तो आपको आती है बड़ी अच्छे तरीके से निकालनी। चलें जी अब इसको कर लेते हैं। सो दिस psi Tij यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट I एट टाइम t एंड स्टेट j एट टाइम t+1 is essentially the product of the forward probability alpha Ti, the transition probability alpha Aij, the emission probability beta BJOT+1 and the backward probability beta T+1J। चार probabilities जो आप देख कर आए थे, शुरू से यहाँ तक आने की probability, SI तक आने की, SI से SJ पे जाने की probability, SJ में OT+1 को खाने की probability, and then beta T+1 की probability यानी SJ से आगे के सारे sequence को consume करने की probability। चार probabilities। बेशक यहाँ रुकना पड़े, पॉज करना पड़े, समझना पड़े, इसको समझ लें। एट दिस पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल होना चाहिए इस न्यूमरेटर के बारे में। एंड देन द डिनोमिनेटर इज एसेंशियली द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सीक्वेंस व्हिच कुड बी जस्ट द फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस इन द फाइनल स्टेट। या अब ये देखें ऊपर वाला मैंने बिल्कुल सेम कॉपी कर लिया है, कोई नई बात नहीं है इसमें, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज किया। या इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं बेटा 1 Q0, backward probability at the beginning of the observation sequence at state Q0। So backward probability शुरू की निकाल लें या forward probability end की निकाल लें, दोनों का मतलब होता है overall probability of the sequence। ये हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। All right, and then finally तीसरा तरीका भी है इसको निकालने का। अच्छा अगर आपको तीसरा ना भी समझ आए ना तो ये डिनोमिनेटर निकालने का कोई एक तरीका भी काफ़ी है, तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट तीसरा बता देता हूँ। सो दिस इज जस्ट द सम ओवर ऑल स्टेट्स J1 to n अल्फा Tj इंटू बेटा Tj। किसी भी एक आप कॉलम के अंदर आकर सारे अल्फाज और बेटाज को आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तब भी आपके पास ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगा। तीन तरीके क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमेशा सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, कभी कभी हमें कोई दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो नाउ गोइंग बैक, अब हम ये देखते हैं कि इस नई इन्फॉर्मेशन जो psi Tij आपके पास आ गई है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि हमारा इवेंचुअल गोल है कि हमने ट्रेन करना है Aij को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ Sj गिवन Si। और हमने कहा था ये निकलेंगी जी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट SI टू स्टेट Sj एंड डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आउट ऑफ स्टेट SI। इन दो से हमने निकालनी थी। अब psi की मदद से हम ये निकालने के लिए तैयार हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट SI टू स्टेट Sj? So the expected number of transitions from Si to Sj is just the sum over all t of psi Tij। यानी पूरे सीक्वेंस में हर पेयर पे जाएं, आपने पेट खरीदा, फूड खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, पेट खरीदा, हर एक पेयर को यानी हर बायोग्राम को पकड़ें और देखें इस वाले के अंदर ये अब आपने हर स्टेट पर जाके देखना इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो फॉर each pair you find the psi Tij to find the overall expected number of transitions from state I to state j। इन सब का सम आपने निकाल लेना है, ठीक है। So the sum of how likely is this path for each pair of consecutive symbols OT and OT+1 in the sequence of observations। पूरी sequence of observations, let's say electronics, food, pet, food, electronics, food, pet, food, हर एक पर जाएं, इसमें जाकर देखें हर स्टेट से हर स्टेट पर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है और उन सब का आप सम करते चले जाएं हर स्टेट के लिए। सो हर स्टेट पेयर के लिए कि इसके लिए लेट से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स पे गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स से पेट पर गया था, पेट से इलेक्ट्रॉनिक्स पर गया था। ये सारे के सारों में जो है वो कितना यानी इस सब में से आपकी एक्सपेक्टेड निकल आएगी, इसकी टोटल निकल आएगी। यहाँ से भी और यहाँ से भी आप ई निकालेंगे, यहाँ से भी ई निकालेंगे, यहाँ से भी ई निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे, सबसे ई को निकालेंगे और सम करके आप बता देंगे ई का ओवरऑल पैथ कितना प्रोबेबल है। सिमिलरली आप यहाँ से भी ईपी निकालेंगे, यहाँ से भी ईपी निकालेंगे, यहाँ से भी ईपी निकालेंगे और ओवरऑल सबको सम करके बता देंगे कि ये वाला ईपी का पाथ कितना प्रोबेबल है। इन अदर वर्ड्स मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी तीनों मार्केट्स फर्ज करें सीधी सीधी सड़कों से जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से पेट मार्केट जाने वाली सड़क जो है ये कितनी प्रोबेबल है। और आप कहेंगे यार देखो इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में
जितनी दफा इस सड़क पे से कोई गुजरा है मुझे उसका सम बता दो। बात समझ आ गई? Is that simple way to understand it? That's exactly what we're doing. Expected number of transitions from state I to state J. Total number of times यहाँ से क्या expected है, कितने लोग, कितनी foot traffic होगी इसके ऊपर, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ स्टेट एसआई। उस स्टेट एसआई से 3 सड़कें निकल रही थी। आपने मुझे तीनों का बेसिकली बताना है कि टोटल सम कितना है, उससे हर स्टेट पर जाने की जो तीनों सड़कें हैं उनका सम बता दें। ये इसको नॉर्मलाइज कर देगा। सो नाउ वी आर रेडी फॉर दैट। फॉर द टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ स्टेट आई वी कैन सम ओवर ऑल ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ स्टेट एसआई, यानी एसआई से जाने वाली सारी की सारी ट्रांजेक्शंस टू ऑल अदर स्टेट्स। एस जे के अंदर जाने वाली जितनी भी मेरे पास ट्रांजेक्शंस हैं उन सब का मुझे सम चाहिए होगा। सो आई विल बेसिकली सम ओवर ऑल जे फ्रॉम आई 1 to n, ठीक है, जहां जहां ये जा सकता है, राइट। सो दिस इज the new value, this is the new definition of the transition probability from AI, so Aij, which is the probability of going from Si to Sj। ये उसका नया estimate है। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, आप पूरे सीक्वेंस पर जा रहे हैं from t is equal to 1 to t minus 1। why t minus 1, why not t, why not t? बिकॉज हमने आखिरी पेयर जो रखा हुआ है वो t minus 1 से t का रखा हुआ है। आखिरी जो दो मार्केटें हैं वो लेट से आपके पास जो वो आखिरी जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके पास यहाँ पर रखी हुई हैं। हम तो पेयर वाइज चल रहे हैं ना, हर पेयर देखना है हमने। सो लिहाजा दिस विल गो टू t minus 1। द लास्ट पेयर स्टार्ट्स एट t minus 1 इन दिस सीक्वेंस। दिस इज द लास्ट पेयर हियर, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो न्यूमरेटर के अंदर you just sum t is equal to 1 to capital T minus 1 psi t ij. In the denominator you are essentially doing psi t ij ik, sorry, where k goes from 1 to n। आपने इस s से जहां जहां पाथ जा रहा था सबकी जितनी भी, यानी मुझसे जितनी सड़कें बाहर निकल रही हैं सबको सम करो, और इस काम को भी रिपीट करो पूरे के पूरे सीक्वेंस के लिए, पूरे के पूरे सीक्वेंस के लिए t is equal to 1 to t minus 1, यानी आखिरी पेयर के लिए। For every pair repeat this whole calculation, find the sum, and you will find out in the numerator what's the expected number of foot traffic on this particular road going from, let's say, electronics market to food market, and divided by what's the expected number of foot traffic on all three roads emanating from the electronics market। ठीक हो गया जी? This is your first probability that you can use in the maximization step। ये आपकी maximization step है जहां पर आपके पास नई वैल्यू आ जाती है इन probabilities की। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया? Now let's move on and try to find the second probability। हाँ, यहाँ t minus 1 इसलिए मैं already explain कर चुका हूँ because we're just looking at the bigrams pairs। So the last pair starts at t is equal to capital T minus 1। All right, gamma tj is the probability of being in state j at time t। ये साई से आसान है, ये हम इससे पहले भी निकाल कर आए हैं जब हम जिस वक्त पढ़ रहे थे ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड को, उस वक्त हमने ये पढ़ी थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है गैमा टी जे इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट जे एट टाइम टी। आप स्टेट जे में थे टाइम टी के ऊपर। सो ओ वन से लेकर ओ टी माइनस वन और ओ टी प्लस वन से लेकर कैपिटल ओ कैपिटल टी तक का पूरा सीक्वेंस है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ कंज्यूम करते हुए आए हैं और यहाँ पहुँचे हैं, एंड देन यहाँ से आगे बढ़े हैं तो इसको कंज्यूम किया है एस जे के अंदर, एंड देन बाकी आगे पूरा सीक्वेंस कंज्यूम हुआ है बाकी पूरे के पूरे HMM के अंदर। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ तक आकर रुकने की प्रोबेबिलिटी है अल्फा टी जे, जिसमें आपने ओ टी को कंज्यूम कर लिया है एस जे के ऊपर, एंड देन बी टी जे की जो प्रोबेबिलिटी है दैट्स जस्ट द बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी जो ओ टी प्लस वन से कंज्यूम करना शुरू करेगी ओ टी तक। ये आपको ऑलरेडी मालूम है। सो नाउ यू कैन वेरी इजीली find the gamma tj which is the probability of being in state j at time t। that would simply be the probability of consuming o1 to o t minus 1। नीचे लिख देता हूँ, probability of consuming O1 to OT minus 1 and then OT using SJ, that's just the forward probability, and then consuming OT plus 1 to O capital T which is the backward probability। so this is just this forward probability multiplied by this backward probability। इसमें और कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिशन की कोई जरूरत नहीं, सब हो चुका है ऑलरेडी। and then divide by the overall probability of the whole sequence। ये अगेन फॉरवर्ड से भी आ सकता है, बैकवर्ड से भी आ सकता है, और बिल्कुल पहले की तरह से इन दोनों के प्रोडक्ट से भी आ सकता है किसी भी कॉलम के ऊपर। क्लियर हो गया जी? अब आपको समझ में आ गया कि गैमा कैसे निकलना है। सो गैमा वाज मच इजियर देन साई, दैट्स अ रिलीफ, that's a sigh of relief। all right, you probably hate my jokes at this point। जिस तरह की हम चीज़ पढ़ रहे हैं obviously इस वक्त तक आपका दिमाग जिन जगहों पर होगा you don't want any jokes at this point, that's fine।
you'll get over it. So but I hope that you're with me, और I hope कि आपको कोई इसमें चीज़ें कंफ्यूज नहीं कर रही हैं. हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बहुत छोटे कदम उठा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा देखते हुए चल रहे हैं. So now we are ready using the gamma t to find out the other probability, the probability of finding a particular symbol in a particular state. एमिशन प्रोबेबिलिटीज. सो किस तरह हमने निकाली थी अब इसको अच्छी तरह समझ लें. नाउ गोइंग बैक टू BJVK, यानी स्टेट जे में आपने सिंबल VK. सो स्टेट जे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा फॉर एग्जांपल. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ OT ऑब्जर्वेशन T इज इक्वल टू VK फॉर एग्जांपल E in the state SJ for example E. मैं एग्जांपल्स इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन VK फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा गया इन स्टेट SJ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स इन स्टेट SJ, यानी कितनी दफ़ा आप जो है वो ऑब्जर्वेशन T के लिए स्टेट SJ के ऊपर आए. ये तो आपका जो डिनोमिनेटर है ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये स्टेट SJ के ऊपर OT की कंजम्पशन की बात कर रहा है. तो ये तो अभी हम गैमा निकाल कर आए. न्यूमरेटर को देख लेते हैं कि वो कैसे निकलेगा, विच इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर सिंबल वाज VK was observed in state SJ. All right, for the numerator we sum the gamma Tj for all time steps T in which the observation OT is the symbol VK. वही काम जो हमने पहले किया था. हम ये कह रहे हैं हर एक इंडिविजुअल सिंबल, हर एक इंडिविजुअल सिंबल के ऊपर जाकर हमारे सीक्वेंस में, सो फॉर एग्जांपल E, E, F, P, F, P, P, E, F, इसके अंदर आप हर एक पर जाएंगे और जाकर देखेंगे व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर आप स्टेट ई में थे, कैपिटल ई में थे, स्टेट एफ में थे, कैपिटल एफ में थे, या स्टेट कैपिटल ई में थे. तीनों की प्रोबेबिलिटी आप इन हर जगह पर जाकर निकाल लेंगे. ठीक है, और उसके बाद सम कर लेंगे, यानी ओवरऑल जितनी खरीदारियां हुई हैं, कितनी दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा गया है इस मार्केट के अंदर. दैट्स द मीनिंग हियर व्हेन यू ट्रांसलेट इट. सो फॉर द डिनोमिनेटर वी जस्ट सम द gamma Tj ओवर ऑल टाइम स्टेप्स T फॉर द ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस. सो सारे के ऊपर सम कर देंगे तो हमारा गैमा वो टोटल आ जाएगा कि हम स्टेट में कितनी दफ़ा है, इस मार्केट में कोई कितनी दफ़ा है. ठीक है. Alright, so the result is the fraction of times that we were in state J and saw the symbol VK to the number of times we were in state J. कितनी दफ़ा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा है डिवाइडेड बाय कितनी दफ़ा आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आए या कोई भी आया है जो भी आपका डेटा सेट है. ठीक है, इसमें एक नोटेशन हम यूज करेंगे जिसमें हम यूं कहेंगे T इज इक्वल टू 1 to T सच दैट OT इज इक्वल टू VK. इसका मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर VK, सो फॉर एग्जांपल OT ऑब्जर्वेशन है और VK का मतलब है लेट्स से हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या फूड या पेट. ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है. सो मीन सम ओवर ऑल T फॉर विच द ऑब्जर्वेशन एट टाइम T वाज VK, सम ओवर ऑल T जहां जहां इस मार्केट से ये वाली चीज खरीदी गई है. So BJVK is essentially T is equal to 1 to T. अब ये देखें T minus 1 नहीं है क्योंकि आप पेयर्स को नहीं देख रहे, अब आप एक एक इंडिविजुअल सिंबल को देख रहे हैं. सच दैट OT is equal to VK, यानी सच दैट ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैमा TJ आपने जो है वो इस टाइम स्टेप T के ऊपर ये मार्केट Jth मार्केट में से ये वाली चीज़ खरीदी है. ठीक है, ये आपने ये सारे के सारे गैमा निकाल लिए. रिमेंबर गैमा क्या था, किसी एक स्टेट से एक खास चीज़ को एट टाइम T खरीदने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे सच दैट की खत्म हो गई, ये वाली चीज़ हमने खत्म कर दी. हमने कहा कि इस मार्केट में आने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ से कुछ भी खरीदने की प्रोबेबिलिटी, दैट्स योर गैमा TJ. So now the fraction of these two probabilities gives you the expected number of times you bought, let's say electronics, from the electronics market uh, uh, over the number of times that you were in the electronics market overall. ठीक है जी, I hope this is clear. Now we have all of our ingredients for calculating the forward backward, so for doing the forward backward algorithm and for doing the expectation and the maximization steps. Very carefully और बहुत तवज्जो के साथ मेरे साथ इसको एक दफ़ा देख लीजिए. So this is your re-estimation of the transition probabilities. This is your re-estimation of the emission probabilities. Using these we can re-estimate the transition A and the observation B probabilities from an observation sequence. Oh, assuming that we already have a previous estimate of A and B. ये हमने पहले भी कहा था कि जी कुछ तो इन मैट्रिक्सेस में पहले से पढ़ा होगा ना, वो इक्वल भी असाइनमेंट हो सकती है, वो सब के सब आपने जो है वो यूनिफॉर्म प्रायर्स के साथ शुरू किया है, हर चीज़ जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसकी, या वो कहीं इन्फॉर्म तरीके से आ रही है, पहले कहीं किसी ट्रेंड मॉडल से आ रही है, वो अब एक अलग मामला है. ट्रेंड जगह से अच्छी जगह अच्छे एस्टिमेट से आएगी तो ये एल्गोरिथम अच्छी जगह कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज देयर इज अ हाई चांस कि ये किसी गलत जगह कन्वर्ज कर जाएगा जो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस भी हो सकता है. So the forward backward algorithm starts with some initial estimate of the HM parameters A and B matrices. We then iteratively run the two steps, the expectation step or E step,
compute the expected state occupancy count gamma and the expected state transition count psi. ये हम इन दोनों को ये कहते हैं स्टेट ऑक्यूपेंसी काउंट, यानी हम एक स्टेट के अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं और एक चीज़ खरीद रहे हैं. एक्सपेक्टेड स्टेट ट्रांजिशन काउंट यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं फ्रॉम द अर्लियर ए एंड बी प्रोबेबिलिटीज. सो आपने ई स्टेप के अंदर अपने साई और गैमास कैलकुलेट करने हैं फॉर ऑल individual paths and for all individual symbols. Yeah, remember e step जो होता है वो individual के बारे में होता है. So हर path यानी हर state transition और हर symbol in every state के लिए आपने expectation step के अंदर psi और gamma calculate कर लेना है. And in the maximization step you essentially use these to re-estimate, to recompute the new A and B probabilities. So these are going to give you A probabilities and these are going to give you the B probabilities. So this is the overall algorithm, the forward-backward algorithm. So what you're doing here is you initialize A and B, you iterate until convergence, which means कि दो successive steps के अंदर आपकी changes जो इन matrices में हो रही हैं वो बहुत कम हुई हों, तो हम कहेंगे converge कर गया अब ये, ठीक है. So first in the E step आपने सारे के सारे symbols, so let me use a different color now, for all symbols and for all states you find the gamma tj, ठीक है, ये आपके पास निकल आया. एंड फॉर ऑल स्टेट ट्रांजिशंस यू फाइंड दी साई टी आई जे, ठीक है, ये आपके पास निकला है. ये ई स्टेप हो गया, हर इंडिविजुअल को अब लेबल कर दिया गया है. एंड देन एम स्टेप के अंदर एम इज अबाउट द कलेक्टिव, राइट. सो नाउ यू गो बैक टू द ए मैट्रिक्स. यहाँ पर ए मैट्रिक्स यूज हुई थी और बी मैट्रिक्स, ए और बी मैट्रिक्स यूज हुई थी. यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स रिकम्प्यूट हो रहे हैं. सो अब आपने जाकर ए और बी मैट्रिक्स की पूरी डेफिनेशन को अपडेट कर दिया. अल्फा ए आई जे के एस्टिमेट्स निकाल लिए, हैट का मतलब एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, और इसी तरह बी जे वी के नए एस्टिमेट्स निकाल लिए. एंड देन you keep iterating over this until your values start converging, they start settling. ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम है, ये बाउंड बैच एल्गोरिदम है जो कि हिडन मार्कऑफ मॉडल की ट्रेनिंग करने के लिए यूज होता है. यहाँ पर अब ये बात याद रहे कि इन प्रिंसिपल इट्स ट्रू कि फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिथम कैन डू completely unsupervised learning of the A and B parameters, but in practice the initial conditions are very important, as we already said. For this reason the algorithm is often given extra information. For example, for speech recognition architectures the HMM structure is often set by hand. किसी चीज़ के बाद कोई चीज़ आना प्रॉबल नहीं है या प्रॉबल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम पहले बात कर चुके हैं. ओनली द एमिशन B and non-zero A transition probabilities are trained from a set of observed sequences. तो हम ये प्रूनिंग अच्छी खासी इसके अंदर कर देते हैं. probabilities को कोशिश करते हैं कि किसी छोटे सेट पे ही एटलीस्ट, लेकिन ट्रेन करके A और B मैट्रिसेस इसको दें, सुपरवाइज्ड अंदाज में ट्रेन करके दें, और फिर वहाँ से आगे ये अब फर्दर क्लस्टरिंग को अच्छे अंदाज में कर सकता है. तो जनाब ये थी हमारी हिडन मार्कऑफ मॉडल की पूरी डिस्कशन. नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू train the hidden Markov models, how to use the hidden Markov models, and now we are basically ready to use this architecture for speech recognition. अब तक हम इसके बहुत से components अलग अलग देख चुके हैं. इंशाल्लाह अगले 2 lectures के अंदर हम इस पूरी गुफ्तगू को अब converge करेंगे, इसे अब जोड़ेंगे और इसके अंदर जो चीज़ें फिट होने वाली रहती हैं वो फिट करेंगे. We have seen almost everything in part, so now we just need to put these parts together to create the overall speech recognition architecture. So I hope आप लोग हमारे साथ इस सफ़र को enjoy कर रहे होंगे. I hope कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. कोशिश हमने यही की है कि एक एक चीज़ की एक एक डिटेल में जाकर उसको क्लियर किया जाए और कोई स्टेप्स को हम स्किप ना करें ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो. So I hope you're enjoying it thus far, and inshallah we're very close to the end. So yeah, just 2 more lectures and then you'll be free. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.